Hello and Assalamu alaikum. I am Muhammad Tahir from Car Guys and I am back with another review of Toyota Yaris 1.3. In this video, I will only show you the differences between 1.3 and 1.5 top of the line variant. Let's talk about front. Toyota Yaris के 1.3 वेरिएंट में डे टाइम रनिंग लाइट्स और फॉग लैंप्स नहीं आती। टोयोटा यारिस के 1.3 वेरिएंट में किसी तरह की फ्रंट ग्रिल पे क्रोम प्लेटिंग नहीं आती और ग्रिल पे ग्लोसी ब्लैक शेड काफ़ी अच्छा लुक देता है। टोयोटा यारिस के किसी भी वेरिएंट में प्रोजेक्टर लैंप्स नहीं आते। इफ़ वी टॉक अबाउट इंजन, 1.3 variant comes with 1nr FE with dual VVTi which produces 97 horsepower. Yaris का 1.3 लीटर वेरिएंट स्टील रिम्स के साथ आता है। एज अ रिटेलर आई कैन अश्योर गाड़ी की पेंट क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। One 1.3 variant have colored door handles, unlike 1.5 top of the line variant which have chrome plated door handles. 1.3 वेरिएंट में स्मार्ट एंट्री मौजूद नहीं, जबकि विंडोज़ कंट्रोल पैनल में कोई फ़र्क नहीं। यारिस के 1.3 वेरिएंट में पुश स्टार्ट का ऑप्शन नहीं आता। अपार्ट फ्रॉम इट, इको मोड एंड स्पोर्ट मोड्स आर आल्सो नॉट अवेलेबल। बट द गुड थिंग इज Toyota has given traction control even in base model. 1.3 वेरिएंट में मल्टीमीडिया स्टीयरिंग भी नहीं आता। Although glove box being smaller in size still gives a premium look due to leather stitching. The 1.3 variant also doesn't have climate control. 1.3 variant also does not offer any high-end car audio system and also lacks rear camera facility. Meter looks simple yet elegant, but it lacks multi-information display. Every variant of Toyota Yaris comes with one driver and one passenger side airbag. 1.3 variants only have 2 speakers, unlike 1.5 top of the line variant which have 6 speakers. To understand the key differences between 1.3 and 1.5 variants, kindly watch my another video of 1.5 top of the line variant. Hope you liked the video. Kindly like and subscribe my channel. Thank you.